Canadian Pacific. अच्छा दोस्तों, चाय बन चुकी है, सुबह हो गई है, बड़े आराम से मैं सोया रात को। बस एक मुझे शिकायत सिर्फ ये है कि सुबह ज़रा अलार्म के साथ उठना पड़ा। सुबह उठना जो है ना वो मेरी कमज़ोरी है यार। आई हैव नेवर बीन एबल टू वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। खैर एनीवे, तो आज बड़े एक्साइटिंग मकसद के लिए हम सुबह सवेरे उठे हैं। आज मैंने एक टूर बुक कराया है। अभी मैं तकरीबन कोई आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। बे ऑफ फंडी एक जगह है, और बे ऑफ फंडी में बहुत ही मशहूर हुए हैं होपवेल रॉक्स, उनको कहते हैं, ठीक है ना। और होपवेल रॉक्स जो हैं तो वो इस तरह रॉक फॉर्मेशन सी हैं, पानी से रोड हुई हुई और वो शोर के बिल्कुल करीब। और वो नॉर्मल रॉक्स हैं, लेकिन मशहूर इस वजह से हैं कि उस एरिया के अंदर, उस बे ऑफ फंडी के अंदर, उन रॉक्स के करीब दुनिया की सबसे हाईएस्ट टाइड आती है। 50 फुट पानी ऊपर आता है और फिर 50 फुट पानी नीचे जाता है दिन में 2 बार, ठीक है ना। आप इमेजिन करें तो पहुंचेंगे हम वहां पे हाई टाइड के ऊपर, ठीक है ना। कायाक लेंगे, वहां से कोई 1 घंटे की कायाकिंग करेंगे, जाएंगे और उन पत्थरों के इर्द गिर्द सारा वो घूम घाम के मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो बना के कि जी जब हाई टाइड आई हुई है तो पत्थर कितने नजर आ रहे हैं और इसके करीब हम जाके किस हाइट के ऊपर है। फिर उसके बाद हम शोर पे वापस आएंगे। मैं इंतजार करूंगा, आपके लिए अच्छा सा टाइम लैप्स बनाऊंगा उस टाइड का। वो टाइड वापस जा रही होगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब वो टाइड वापस चली जाए तो जिस जगह के ऊपर हमने कायाकिंग की थी उस समुंदर के फर्श के ऊपर वॉक करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो दैट शुड बी एक्साइटिंग, ये जिस जगह पे मैं ठहरा हूँ ये एक्चुअली एक रेलवे म्यूजियम है और इसमें ये प्लेन भी एक खड़ा है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार जरा इसका एक चक्कर तो लगा लें, देखें कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वो है। ये देखें, ये कोई स्नो प्लाव टाइप की कोई चीज़ है। ये है, ये कह रहे हैं फायर फाइटिंग वो है, ट्रेन है कोई। तो इट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स जस्ट टेक अ क्विक वॉक एंड सी कि क्या क्या है। पिकनिक टेबल्स हैं, अच्छी ट्रैश कैन्स पड़े हुए हैं। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे यार। छोटा सा चुन्नू सा गांव है ये, हिल्सबोरो। उसका देखें उन्होंने एक किस्म का स्टेशन सा बनाया हुआ है, हिल्सबोरो। ट्रेन बेचारियों के शीशे वीशे तोड़े हुए हैं लोगों ने। अंदर तो मेरे ख्याल में नहीं जा सकते होंगे हम। या इट्स लॉक्ड। वो जरा वो एक आइस ब्रेकर सा जो है उसको जरा देखें, वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बाकी डब्बे शब्बे तो नॉर्मल ट्रेन के डब्बे हैं। जहाज बड़ा कूल है यार, इट्स रियली नाइस। थोड़ा बेचारा खस्ता हालत में है, बट दैट्स एक्सपेक्टेड अगर आउट इन द ओपन खड़ा है। ये क्या चीज है यार, ये तो कोई बड़ी अजीब सी कोई चीज लग रही है। ये पता है ये स्नो प्लाव है। वाओ, दोनों तरफ इसके वो है। सो यू नो व्हाट, यू कैन प्लाव बोथ वेज, यू नो। अच्छा जनाब, तो तैयारी मुकम्मल है। चलें जनाब, दुनिया की सबसे हाईएस्ट टाइड देखें, हाईज एंड लोज उसकी। एक्साइटेड अबाउट दिस, आज चलें। जबरदस्त है यार। कायाकिंग के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ जिंदगी में 1-2 बार ही कायाकिंग की है, बट आई रियली एंजॉयड इट व्हेन यू आर ऑन द वाटर, इट्स रियली नाइस। तो अच्छा सा उसको जो है तो कैप्चर करना है यार। हर रात जो मेरी है उसकी तरह ये वाली रात भी बहुत ही कंफर्टेबल गुजरी, बहुत ही मजे की। और अल्लाह मेरे इस ट्रेलर को नजर ना लगाए यार, इतना कंफर्टेबल है ना ये कि मजा आ जाता है बिल्कुल जो है। तो आफ्टर अ लिटिल व्हाइल इट बिकम्स योर होम, you get used to it,
और जो है तो बहुत ही कंफर्टेबल यार, ज़रूरत की हर एक चीज़ है इसके अंदर, मज़ा आ जाता है इसके अंदर स्टे करते हुए। मेरे लिए तो यही फीलिंग यार बड़ी ज़बरदस्त है कि आप सोचें आज है 15th है, ठीक है ना, 15 दिन मुझे हो गए हैं सड़क के ऊपर निकले हुए, ठीक है, आई एम ऑन द रोड, आई हैव नॉट स्पेंट अ सिंगल डॉलर स्पेंडिंग द नाइट समवेयर। तो ये जो है तो अगर आप $150 का भी कमरा $100 का चले आप कर लें, $1500 तो आपने इधर सेव कर लिया, यू नो, होटल्स में रहने के। $100 में किधर कमरा मिलता है, लेकिन ये है कि चलें जी। तो और कंफर्ट की कंफर्ट, ये नहीं कि जी आप कोई बड़े अनकंफर्टेबल हैं और बड़े यू नो मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं। दूसरा ये कि जिस जगह पे, मतलब होटल तो आपको ऐसे नहीं मिलता ना कि जी वो जिस जगह पे मैंने जाना है एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर होटल बुकिंग हर एक चीज हो जाए मेरी। नहीं, आप रात को चल पड़े जनाब, जैसे उधर जाएंगे कोई ना कोई जगह तो होती है जहाँ पे आप ट्रेलर रोक दें और आराम से रात गुजारते हैं। तो बड़ी शानदार चीज है यार ये ट्रेलर्स और ये जो है ना। यूरोप जब ट्रैवल करेंगे ना इस ट्रेलर के अंदर, दैट वुड बी पेन अल्टीमेट यार। सारा यूरोप अगर मैंने क्रॉस कर लिया ना इसके अंदर, एक साल आराम से गुजार के हर एक कोस्ट लाइन के ऊपर जहाँ कहीं दिल किया उधर रुक के आराम से टाइम गुजार के, और शानदार हो गया। यार ये जल्दी उठना मैं सीख लूँ ना तो जिंदगी मेरी संवर जाए ऑनेस्टली। ये सुबह सवेरे उठना जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे फादर मुझसे कहा करते थे, वो कहते थे कि यार दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो सुबह सवेरे डॉन के टाइम पे उठता ना हो। वो बहुत सुबह सवेरे उठा करते थे, और मेरी जो है वो बात उनकी सही है, पता है, आई हैव टू एडमिट कि ये बात उनकी सही है। जो आदमी सुबह नहीं उठ सकता ना, वो कभी भी जिंदगी में कुछ करने के काबिल नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मुझे जब उन्होंने कैडेट कॉलेज भेजा ना, तो मैं 12 साल का था, कैडेट कॉलेज भेज दिया जनाब उन्होंने। वो जब 12 साल का बच्चा यार, अब मैं सोचता हूँ मेरी बेटी जब 12 साल की थी, वो तो बिल्कुल जो है तो उसको हम रुई के गोलों के अंदर रखते थे उसको। उन्होंने पकड़ के मुझे कैडेट कॉलेज भेज दिया जनाब। वो यूनिफॉर्म पहने हुए, वो परेडें कर रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं वो लोग, अजीब अजीब। वो यू नो इट्स टफन्ड मी अ लॉट, बट उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगता था ना कि ये क्या बकवास है यार, घर में आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने हॉस्टल भेज दिया मुझे। तो मेरे फादर हमेशा ये कहा करते थे, कहते हैं तुम जब 5 साल जो है ना सुबह उसके ऊपर अजानों के टाइम के ऊपर उठोगे, ये वो तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम जो है तो सारी जिंदगी जो है तो मुझे दुआएं दोगे, कामयाब रहोगे ये वो। तो मैं इतना हडहराम था, जिस दिन पहले दिन कैडेट कॉलेज से मैं निकला, और उसी दिन जो है 12 बजे उठ रहे हैं जनाब, 11 बजे उठ रहे हैं। और टीनेज में जिस तरह होता है, यू नो, आराम से कोई कुछ भी नहीं सीखा मैंने। बड़े सख्त वो डिसअपॉइंटेड थे मुझसे कि यार ये क्या बकवास है, इसको मैं ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो है तो 10 से मस ही नहीं हो रहा।
सबसे पहले पहुंच गया था। कुछ देर में ही बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आ गए। There you go. Thank you. हमने अपना अपना कायाकिंग का सामान उठाया और गाइड के पीछे पीछे चलते कायाक्स में अपनी पोजीशन संभाली। Vice versa, you want to go to the left, you paddle only on your right. Make sense? It sounds weird, and for the person in the back, it's going to... गाइड ने हमें कुछ देर बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी और हम समुद्र में उतर गए। As the tide kind of comes up a little bit more, makes our job of dragging you to the sea a little bit easier. So today we got some really nice, relatively calm waters. So that shouldn't be any cause for us to go for a swim. We call that getting the full Bay of Fundy experience, seeing it up top and down below. पैडलिंग का बहुत ही मजा आ रहा था और मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। Whoa. मगर कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया और कायाक को रेत में घुसा मारा। Okay. Should I push too? Okay. Push forward. Okay. Okay. गाइड्स हमें साथ साथ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे थे, जैसे ये रॉक सामने जिसमें हाथी की मुशाबहत थी। Oh, yeah. I see it too. Margaret even has her ears, you know, and we're getting a lot of water. So we're gonna stop and talk a lot on the way there. And then on the way back, we'll have all the water that we want to go through all these tunnels in here. So on the way back, next time we stop here, all those ropes are gonna be gone. And then we're actually gonna go through that tunnel, through those rocks and all that stuff. It'll be pretty cool. And but we gotta get there first. So guys, this is the second cove of the park. We missed the first one, but we'll stop there on the way back. And this one's called Castle Rock Cove. So whoever named it thought it was a good idea, or thought that these two rocks right here kind of look like the turrets of a castle, like those two corner blocks, and so they named it Castle Rock Cove. And this one's pretty cool because we have the oldest flower pot rocks in the park, and then we have the next one to be formed, which is kind of cool. You guys all know what a flower pot rock is? yeah. Yep. For those of you who don't, it's pretty much a rock like this one that is freestanding, that is not attached to anything, that has a little bit of green stuff on top. That's why we call it flower pot. And so this one right here is actually the oldest one. And it's the oldest one because of how skinny it is on the bottom. It kind of looks like it's going to fall over any second. It's not, I promise. And it's also the furthest away from the actual cliff. So it's been eroded so much that there's actually about 20 feet of distance between that rock and the cliff, which is pretty cool. And then this guy right here is the next one to be formed. It kind of looks like it's freestanding and it's standing by itself. But as you go by, I'll point it out. There's actually two rocks that are still kind of wedged in there to the cliff face. And those rocks are supposed to fall, as experts say, at the same time as this one. So we'll have like the oldest one to fall over, probably within about 50 years, and then we'll have the next one to be formed, all in the same cove, which is pretty cool. They only had a very small amount of fresh water, so much of what they were drinking was rum and wine. They weren't in the best of headspace, per se. Many months at sea, when they got here, they landed, they wrote in their logbooks, here we see the lovely legs of the women back in France. Okay. And that was a couple years ago. There might have been some erosion. हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जरा रेस्ट करते हुए कई केव्स में से होते हुए Nice. फाइनली होपवेल रॉक्स के सामने आ गए।
So this is the first cove we kind of skipped. There wasn't a lot of water when we first got here, so I just kind of wanted to get this out of the way and go through and stop somewhere. Thank you. This is Thanks for turning it around. All right, this is the most popular cove. You guys, if this is your first day here, you guys will probably end up on that staircase like those folks over there. A lot of times, that archway that we first. मैं थोड़ी देर इस वीडियो को फ्रीज करना चाहूँगा। इन पत्थरों को गौर से देख लीजिएगा क्योंकि कुछ ही देर में हम इधर वॉक करेंगे। That's actually the most photographed image in the entire province. A lot of times the tourists, they come here and they come here at high tide and there's nowhere to walk at high tide, kind of like right now. So they just relax on the staircase, they take a couple pictures, and then they make their way. But so that right there is Lover's Arch. And the funny thing about Lover's Arch is the locals love it. On the other side, it looks like two people are coming together and giving a little smooch. So it's a romantic rock here in New Brunswick, and 4 couples have actually gotten married here, or 4 local couples. Wow. So it's pretty romantic. Some white dresses turned brown a little bit. It's a pretty quick marriage. Everything's brushed up. For sure. And from what I've heard, 2 of them are still together. So there's 50% success rate. If you get married under there, pretty good chance. And to give you guys a good perspective of how high the water gets, this is a good cove to kind of picture that. So right now we're about 20 minutes away from high tide. We're at 40 feet. If you look at Lover's Arch, that archway is completely filled with water at the 47 feet that we get. You won't be able to kayak through there. And then even at 44, 45 feet, you won't be able to fit a kayak through there. It'll be completely filled with water. Wow. So the tide is still rising. Wow. And Brad, you said this is the best place from where you could get a time lapse. Yeah, kind of where those guys are standing over there. Hey, guys. That's a good spot too, right there. Oh, okay. Show the arch. Yeah, show the arch and, kind of This is another see great spot exactly. if you Yeah. guys want to see those pictures. If not, there's one more tunnel we want to hit, and then अच्छा जी we'll go. यार kayaking का तो अलग से मजा आया, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस। पता नहीं कि मैं इतना अच्छा कैप्चर कर पाया कि नहीं, बिकॉज एक तो पैडल करना था, हम 2 बंदे थे एक बोट के अंदर। मेरे साथ बुढ़ी एक स्कूल टीचर थी, वो पीछे बैठी हुई थी, वो बेचारी, उससे ज़्यादा जोर लगा भी नहीं जा रहा था। तो मुझे बुरा लग रहा था कि मैं कैमरा पकड़े रखूं और वो पैडल जो है वो दोनों हाथों से करना पड़ता है। तो मैं कोशिश कर रहा था, जितना मैंने वीडियो में कर सका उतना मैंने कोशिश की, लेकिन बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस यार, बहुत ही मज़ा आया। वो गाइड्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही एंटरटेनिंग, दे वर वेरी फनी, दे वर वेरी इंफॉर्मेटिव। तो खैर हमने पूरी कोस्ट लाइन की कायाकिंग की 2 घंटे, ठीक है ना, और वापस आ गए बिल्कुल हाईएस्ट टाइड के ऊपर। अब इधर जो है तो मैं नीचे ज़रा ढूंढना चाह रहा हूँ वो जगह जहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँ और एक वो उतारूँ, क्या नाम है, टाइम लैप्स। तो गाइड खड़ी है, मैं इससे ज़रा पूछता हूँ। हेलो, so you might be able to help me. I want the best spot to have a time lapse of the tide going down. Okay. So is that the stairs that are Yeah. out there? Okay, that would be the space. Would I haven't been there as yet, but do you suppose I'd be able to get a place in which there's not many people crossing over because they'd spoil the time lapse? Yeah, you could probably put it Right next to the fence? right on the So it's a tripod. Yeah. So I'll put that up. I'll have to stand with it, stand guard. So I was told it takes 6 hours for the thing to go down. Yeah, 6 hours. So which and means it's already started to go down. It's been going down for an hour and some minutes. It was at its lowest point at 10:40. 10:40. Okay. Yeah. Okay, so about an hour. Okay. And 6 hours, eh? So it's going to be low tide at 5:10 today. 5:10. It's Okay. going to keep going down until that time. Okay.
And 5:10 is when we'd be able to kind of walk down, you know, at the bottom of You'll be able those. to walk down before that. Okay. Yeah, you'll be able to walk down at about 1 p.m., maybe a little bit before. Oh, so you think because the tide keeps going, you know, a long distance, but this area would dry up. Yeah. So that's good, which means I don't need to wait for 6 hours for the time lapses. I thought that it takes 6 hours for it for land to show up at the monuments. The tide is calculated like it needs to rise 28 feet just to get to the bottom of the Lover's Arch, which is Got it. you see on those Okay. pictures, and then it rises another 18 feet after that. Okay. So what you're going to see, if you start a time lapse now, it's not going to be as impressive because the water isn't as high. It's been going down for an hour and a half already. Oh, so you think that? So, Oh, yeah. geez, I thought but that you know I it's still okay. have time. Go do it anyway. Okay. I mean, it's just that it's not one of our highest tide days, Okay. and also you're not catching it right at high tides. No. Okay. So it won't go that down. Now, when do you suppose? Oh, you said around 1 o'clock is when we'd be able to see. So which means I still have another 1 hour or so. Yeah, an hour's time lapse should be good enough. Okay, that's good enough. Okay. Okay. It is impressive regardless. Okay. Thank you. Thanks. चलें जी, तो ये मुझे पता ही नहीं था कि 1 घंटे से टाइड नीचे जा रही है यार। तो चलें, कुछ कैच कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? होपफुली इट शुड बी नाइस। बारिश शुरू हो गई यार। सो आई हैड टू रैप दिस अप अ बिट अर्ली। मैं 2 घंटे में बनाना चाह रहा था, लेकिन 1 घंटे का सिर्फ बनाइए। तो क्या करें, अनफॉर्चुनेटली वेदर जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिस तरह मैंने आपको कहा। तमाम ट्रैवल फोटोग्राफी का, ट्रैवल वीडियोग्राफी का ये काफ़ी इक्विपमेंट जो है तो वाटरप्रूफ। जैसे एक कैमरा मेरा जो है, लेकिन मैंने जिस गिम्बल के ऊपर ये लगाया हुआ था वो गिम्बल नहीं है वाटरप्रूफ। तो गिम्बल जो है उसके अंदर पानी जा रहा था। But anyway, let's just see। इस जगह पे हम लोग सुबह kayaking कर रहे थे। It's kind of a weird feeling। लेकिन एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर थे हम लोग। तो ये पानी जो है, ये जो पतले आर्चेस आपको और ये ग्रीन कलर की मॉस नज़र आ रही है ना, इस तक पानी था। इस आर्च में से हम लोग गुजरे सुबह। उधर से थोड़ा सा रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा कीचड़ वाला रास्ता है। लेट्स सी, चलें वो ज़रा मैं देखता हूँ, उसको एक्सप्लोर करता हूँ ज़रा। देखें, इस आर्च में सुबह हम लोग इधर कायाकिंग कर रहे थे। Weird। wonder कि ये सीवीड जो है ये खाने की है कि नहीं, because there are certain kinds of seaweed that you can eat and they are very very tasty, extremely tasty। ये पता नहीं कि ये है खाने की कि नहीं। Kelp। Kelp है ये, खाई जाती है ये। You know, I don't know if this one is eatable or not, लेकिन ये बहुत ही tasty होती है। There's a lot of South Asian, उसके अंदर Japanese cuisine में, you know, you can eat this। It's very very tasty। Soups में उनके होती है, खाने में। I've eaten a lot of it। It's very tasty। चलें जी, let's call it a day, let's call it an experience। So this was a nice day's outing यार, बहुत ही मज़ा आया kayaking की। That was fun। फिर उसके बाद of course tide को notice किया। It was really weird, हाँ, जहाँ पे सुबह kayaking कर रहे थे हम, तो वो उसने हमसे कहा कि पैडल
पैडल्स अपने जो है वो पानी के नीचे वो करो तो नीचे ज़मीन को नहीं हिट करेगा। वो मेरा पैडल जो था वो 7 फुट का था, तो 7 फुट तो वो नीचे कम से कम था पानी। वो पता चला कि वो तकरीबन कोई 18-20 फुट पानी होता है तकरीबन। तो सुबह जब हम कायाकिंग कर रहे थे 16 to 18 फीट ऑफ वाटर में, उधर अभी जो है तो मैंने वॉक की 3 घंटे बाद। तो या नेचुरल वंडर, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट टाइड। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया यार ये एपिसोड। आपसे मैं स्टेज के ऊपर इजाज़त चाहूँगा। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन दबा दें यार अगर आपको पसंद आया हो। ज़बरदस्ती नहीं है, अगर पसंद आया हो तो दबा दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़, जो कोई भी इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, ताकि वो भी जो है तो देख सकें, हमारी ये कम्युनिटी बढ़ती रहे। ठीक है ना? चलें, खुदा हाफिज़।